Hi, this is Tushar Rangan from 99 Workouts and as you know that मेरे शो में और मेरे एपिसोड में हर एक एपिसोड में एक खास व्यक्ति को मैं पेश करता हूँ जिनकी एक अद्भुत कहानी होती है। और ये बेसिकली आज मैं एक बहुत ही बढ़िया एक फिटनेस सेंटर में हूँ जो पूना में है और यहाँ पे पूरी एक्टिविटी चल रही है अभी। और मैं चाहता था कि ये जगह को मैं फीचर करूँ क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्लेस इन पूना विच वी आर एट Evolve Fitness and I'm going to introduce you today to a very young dynamic guy whom I have known for a long time and he has amazing inspirational story। जैसा आपको पता है कि each and every person who features on this 99 Workouts series has got an inside story। तो आज हम पता करते हैं कौन है ये स्पेशल गेस्ट in just 1 second and I would like to invite my new guest for today, that is Chetan. Hi guys. Thank you Chetan for being part of my show. It's a pleasure. It's my honor also, like I had to list out a lot of people and I follow you a lot on the social media and I know that you have a very interesting journey. Chetan, आप मुझे ये बताइए, जैसे मैं जानता हूँ आपने अपना जो शुरुआत है, you are a Pune boy, you come from a मारवाड़ी family, जो भागवत जैसे सुना जाता है कि बहुत रेस्ट्रिक्शंस होता है मारवाड़ी फैमिली में, लेकिन आपने पहला जो जॉब है एज अ बाउंसर स्टार्ट किया। Yes. हाउ डिड दिस हैपन? So basically, from a very long time, I had this feeling that I want to work, I want to do something, but because of my age, मुझे कोई जॉब नहीं मिला। I was just 17 years old. बट एक चीज़ अच्छी थी जो मैंने जिम बहुत अच्छे से मैं करता था फ्रॉम द एज ऑफ 16 एंड आई वाज अ गाय हु वाज बुलीड इन माय स्कूल अलॉट। तो हर बच्चे के साथ होता है, टिपिकल मारवाड़ी बच्चों के साथ तो मैंने देखा बहुत बार होता है बिकॉज यू डोंट फिट इन एनी क्लैन। एंड व्हाट हैपेंड इज विद दैट आई स्टार्टेड जिमिंग फ्रॉम द एज ऑफ 16 and I had a good physique by the age of 17, So I was only getting one job, that was of a bouncer, and I was very happy to take it up. And I started my journey from there. I used to work in all prominent clubs of Pune, like Area 51 and number of places. And that is how my journey started. And trust me, until the day I used to give lot of auditions. मुझे हमेशा लगता था कि मैं I'm made for something better. And one fine day I go for an audition of Mr. Pune. Right. And then in the evening I am working at Shisha Lounge, that is in Kalyani Nagar. Right. And I get a call that congratulations, you've been selected as a top 10 finalist for Mr. Pune University. And I'm shocked, I call my boss, I say that I need 7 days of leave. And लाइफ में जुआ खेल कर मैं जाता हूँ वहाँ पर 7 days की ग्रूमिंग लेता हूँ। And I couldn't believe that after 7 days, I've actually won the title of Mr. Pune University. Tell me something, Chetan. Being your background, you're from a Marwadi family, which is generally ऐसा कहा जाता है it's a business oriented family. Generally, हर एक बंदा जो मारवाड़ी family का is involved in some kind of business. But you got into being a bouncer. Yeah. And bouncer मतलब मार धाड़, illegal activities को stop करना ये सब. So tell me something. How was this as an acceptance in your family? Honestly, for the first 6 months, my family did not knew that I am working as a bouncer. I used to tell them that I am working as a Zumba instructor and I am going for the job. मैं अपने बैग में बाउंसर का टी-शर्ट कैरी करके जाता था एंड रात में आ जाता, कहता था इवनिंग में जुम्बा पार्टीज होती है उसमें मैं डांस करवाता हूँ लोगों को। एंड दैट इज हाउ आई यूज्ड टू से दैट बिकॉज कहीं ना कहीं हमें हमारे किसी के भी फैमिली मेम्बर्स कभी मानते नहीं, बट अगर आपको लगता है कि आपके दिल में आप कुछ कर सकते हो, लाइफ में आपको कुछ करना है, तो कभी कभी एक अच्छे फोकस के लिए झूठ बोलना भी ज़रूरी है। बिकॉज आई नो बीइंग इन अग्रवाल फैमिली, मुझे कहा जाता अपनी मिठाई की दुकान है उसमें बैठ जा, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड माय लाइफ टू बी। Right. Well, this channel is all about the inside story and the real truth. So झूठ बोलने का नहीं, और यहाँ मेरे गेस्ट भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल सत्य है जो भी बोल रहे हैं। चेतन, ये मुझे बताइए कि during your life, you started so well, you look so fantastic now. And now, Chetan, you're into professional hosting. Yes. Like, I'm nervous because I'm hosting a host. So, जो आप शोज करते हैं जहाँ पे you have to stand as a host. Correct. So more than 99% of the limelight is on you. Absolutely. So was fitness one of the reasons why you kind of thought because you're the host, Yeah. you need to look good, something like that? Correct. So I feel fitness is something that is everything. It's like the sheet upon which my art is placed. Right. I might be a good orator, I might be a good speaker, but until unless my personality is that good enough, people would not like to listen to me. Imagine look at Tushar. He has such a good personality. People इनकी पर्सनालिटी का दबाव इनके शब्दों से पहले आता है।
So because of that, I took this thing very seriously. Living almost a sober life from last 3 years. So I don't drink, I don't have anything, you know, that affects my health. So always looking, you know, chiseled and fit on the stage makes it happen. And whenever you go on stage, I feel that people in the audience, everybody speaks, you know, but people should feel, yeah, I wish I could look like this guy. I wish I could be fit as this guy. Right. सूट तो सब पहनते हैं, बट क्या सब पर सूट होता है, Right. you know? So that is how, you know, every day I make sure that I am giving my best. And from last 16 years, you know, sorry, from the age of 16 I started working out. My age is 28 right now. From last 12 to 13 years, I have not taken a single day of holiday in my life from gymming. Because, you know, just like people go to office, engineers go to their colleges and everywhere, this is my office. You know, Right. I spend my 2 hours, 3 hours every day over here. तो टेल मी समथिंग चेतन, ये जो प्रोफेशन है, जहाँ तक मुझे पता है, यू नो, होस्टिंग शोज एंड थिंग लाइक दैट, इसके पीछे का हार्डवर्क क्या होता है? जनरली यू नीड, सपोजिंग यू आर नॉट डूइंग द सेम काइंड ऑफ शो एवरी डे, Absolutely. सो व्हेन यू आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ शोज, सो कुछ बताना चाहिए कि इसके पीछे का प्रिपरेशन कैसा करते हो आप? So honestly, hosting के बारे में तो हमें जब भी हम शो पे जाते हैं, we have given the minutes of the show ना, that welcoming is there, this and this person is going to come up. बट इससे पीछे का प्रिपरेशन होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे हम काम करते हैं, अपने गले का ध्यान रखते हैं, यू नो, ईटिंग हेल्दी, बिकॉज अगर आपकी आवाज़ में खराश आ जाती है, आप इतना अच्छा बोल नहीं पाओगे, तो वॉइस को ग्रूम करने के लिए सालों लग जाते हैं. एवरीवन हैज अ गुड वॉइस, बट पीपल डोंट पे अटेंशन ऑन द बेस ऑफ देयर वॉइस. तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं अपनी आवाज़ का बेस भी बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ. तो ऐसे आई एम ऑल्सो मिमिक्री आर्टिस्ट, सो आई कैन मिमिक मोर देन 16 वॉइसेस. सो ऐसे करते करते आपकी आवाज़ पे फोकस करना होता है, बट मोर प्रिपरेशन इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. तो जैसे कि अबाउट योर प्रेजेंटेशन में आपके कपड़े आ जाते हैं, आपके प्रिपरेशन में ऑफकोर्स फिटनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ों के साथ में नोइंग द डेली लाइफ, लाइक एवरी डे मी एज अ होस्ट आई कीप सर्चिंग फॉर जोक्स, आई कीप सर्चिंग फॉर शायरी. यू हैव टू हैव अ ह्यूज कंटेंट इन योर हेड, एक बहुत बड़ा वर्ड बैंक होना चाहिए. Right. तो दिस इज द प्रिपरेशन दैट आई हैव. So tell me something, Chetan, now that you know we are kind of coming out of this lockdown situation, जो अचानक से पूरी world over में आ गई Correct. as a pandemic, and all the events activities got affected. Absolutely. As I know that you know your base, you have come from hardship. Absolutely. So having that base, was this point of time easy to overcome? As in Did pandemic? you find it you know something totally new? In the pandemic? Yeah. See, pandemic was an eye-opener, you know. Honestly, being an artist, being a freelancer, initially we worked a lot, we stalked a lot, but we had a nice time, you know, gala time. Then pandemic kind of showed us a real place that, you know, you won't just sit around. हमारे पास कोई salary आने वाली है नहीं. And it was really hard, you know, in the pandemic to survive. But then again, you know, I have been saying this to everyone that every difficulty is an opportunity. In the pandemic, we came up with reality shows, so I kind of came up with good concepts. I started pitching them for virtual shows. Now, virtual is a new thing, and somehow, you know, with that kind of events and all, I kind of survived. Okay, pandemic has been hard, but I would always say that people should, you know, what I learned is even if you're a freelancer, you should have a second earning option. You know, pandemic was really hard. I even lost my dad in last November. So this pandemic was, you know, something that I never expected for. But still, you know, I would say that it was good. At least fitness was something that kept me sane. Every day at my home, I kind of prepared a home gym, and I feel fitness is something that has brought me So out. tell me, Chetan, आप जो shows वगैरह एंकरिंग करते हो, ये सब जनरली ये लेट नाइट यू नो Correct. खत्म होता है. Yeah. So how do you manage your fitness activity in this? Are you an early riser? Yeah. Do you take care of your diet? You know, Yeah. or you carry your food for this? Because I'm sure these shows go on till late night. You know, Absolutely. and by the time you wind up and come. Absolutely. Yeah. So how do you manage this? See, मैनेज कुछ नहीं होता, you know. आप भी बहुत लोगों से सब मिलते होंगे, लोग कहते होंगे यार टाइम नहीं मिलता. Everyone has a busy life. करना पड़ता है, you know. Right. If you have this as a priority, Right. तो आप कर ही लोगे. So Right. for me, I feel fitness is my priority. So every day I manage. I'm not an early riser by the way. Until unless I have a show to go for. Otherwise I wake up like 11 o'clock, 12 o'clock. But I make sure that 3 o'clock तब तक ये मेरा टाइम है. From 12 or 11 to 2 or 3, that's my time. I don't take meetings in that time. I don't take appointments. I don't take, you know, maybe I'll take a call, but I avoid things. You know, I'm like अब मैं 4 बजे के बाद free हूँ, and that is how I've been living. Because of this, because I give time to myself, I'm so happy that I outpour. Right. You can't just go on stage and talk. Right. You know, when I am workout for 3 hours, I'm so confident, so happy that stage पे मेरी happiness मैं हज़ारों लोगों के साथ share कर सकता हूँ. Right. Wow. People are so depressed with their life. They spend their personal time on their bosses, in their personal life, in their job and all, that they're not happy. Right. You know, being an anchor, you should be, you know, like filled with that happiness. You're the life of the show. Yes, and you should have life for yourself. Yeah. So मैं कहूँगा हर बंदा जो चाहता है फिटनेस हर कोई कर सकता है, no matter what your job is. You need to make it your priority.
तो मैं अपनी प्रायोरिटी बनाता हूँ। खाने की बात की जाए तो आई एम नॉट मच ऑफ अ गाय हू स्ट्रिक्ट ऑन डाइट। आई प्रेफर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्लीन कार्ब्स खाओ, कहीं भी जाते हो दाल चावल मिल जाता है, दाल चावल खाओ, उसके साथ में प्रोटीन के सोर्स में जो भी मिलता है खाओ, जीते रहो बस, छोड़ो मत। So you're watching 99 Workouts with me and Chetan. I think I should make Chetan my brand ambassador. जो मेरा पूरा जो प्रोसेस है, जो मैं मिशन पे चला रहा हूँ 99 Workouts is like how people need to take out time to take care of their health. This is the most important. So tell me something. My one last question to you would be, how do you see fitness, or what kind of shows are of your liking? Do you like to, because you're part of the gym and you Correct. love sports, Yeah. would you like to host sports activities or commercial entertainment? आपका personal liking क्या है? मेरा पर्सनल लाइकिंग होता है एंटरटेनमेंट शो। आई डोंट लाइक वेरी बुकिश काइंड ऑफ शो, कॉर्पोरेट शोज है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, मज़ा नहीं आता। आई लव व्हेन पीपल आर देयर टू एंजॉय, Right. बिकॉज ऑनेस्टली आई एम अ प्रोफेशनल एंटरटेनर, बट दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय। तो जहाँ ऑडियंस आती है ना, बैठ कर भाई आज मज़ा होगा, वहाँ हम उनको मज़ा देते हैं, बट पीपल आर देयर, भाई आज एक कॉन्फ्रेंस है, आज एक मीटिंग है, वहाँ पर एक फॉर्मल जो हो जाता है। Right. तो आई फील एज एन एंटरटेनर आई लव टू एंटरटेन। जहाँ आपकी ऑडियंस एंटरटेनमेंट, संगीत की बात कर लीजिए, लोग इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, आप किसी एंटरटेनमेंट गाला नाइट, मज़ा आता है। So that's my personal liking. So rightly said, and of course before we wind up, Chetan, you said that you're a mimicry, you Yeah. can do mimicry of Yeah. kids. आपका favorite किसको आप mimic करते हैं generally? और मेरा जो सबसे फेवरेट है, यस यस यस, मैं चाहता हूँ कि आप एक मोटिवेशनल मैसेज 99 वर्कआउट्स के लिए ये आवाज़ हो। ओके। तो मेरा मोटिवेशनल मैसेज आप सभी के लिए रहेगा, वो सारे लोगों के लिए जो सोचते हैं कि उनका एक अचीवमेंट है फिटनेस को लेकर है, लाइफ को लेकर, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं सकता। तो आपको सनी देओल की आवाज़ में कहूँगा, सनी देओल कहते हैं कि मंजिलें तो मिल जाती है भटकते ही, नाकाम तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं, घर से निकलो मंजिलें तुम्हें ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच तुषार। Well, I got a free celebrity of the show. मुझे डबल चेतन भी मिल गया, सनी देओल का वॉइस का सनी देओल ही मिल गया, ऐसा लग रहा था। So thank you very much, Chetan, Thank you for so much. being part of my episode and Thank you so much. taking out time. So please keep on watching 99 Workouts, because we have some very real inside stories, the real truth, people who are engaged in a different profession during the daytime, and they do spend a lot of time taking care of their health, which is the most important thing at this hour. So keep watching 99 Workouts, because my next guest is going to be equally special. Thank you so much.